आईने में। हेलो एंड अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अनुमानों के आईने में। दोस्तों, मैं हूं साक्षी मांडवाल एंड इट्स गोइंग टू बी अ बिग डे एज इंडिया किक स्टार्ट देयर जर्नी इन द वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022। मेरे साथ आज यहाँ पर जुड़े हैं मेरे दोस्त एंड को एंकर आयुष शर्मा। गुड मॉर्निंग आयुष। Good morning, Sakshi. And we're also joined in the studio over here by former India cricketer Venkat Sundaram. Good morning, Venkat ji. Good morning. And senior sports journalist S. Kannan. Good morning, Kannan. Very good morning. वेंकटेश, इंडिया की साइड अपना पहला मैच खेलेगी 2022 वर्ल्ड कप का। लास्ट टाइम फाइनल मुकाबला खेला था इंग्लैंड से, तो जो मोमेंटम है उसको कैरी करते हुए कोशिश करेंगे कि ये जो पहला मैच है जीत के साथ शुरुआत हो आर्क राइवरी पाकिस्तान सामने। हाँ बिल्कुल, ये लेकिन आई थिंक उससे पहले जेंटलमैन विल टेक यू डायरेक्टली टू द टॉस दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। वेल, इस समय हमारे बीच में जो टॉस हो रहा है उसमें रिजल्ट्स ही आए हैं कि इंडिया हैज वन द टॉस एंड चोजन टू बैट फर्स्ट। दैट इज द अपडेट, द गुड न्यूज कमिंग इन जेंटलमैन। Kannan, your take on it? It's a good pitch to bat today and score high? I said looking at the matches over here. पहले आपको लिए चलते हैं सीधे टॉस पे। Has it been in the warm-up games? It's been good. We've tried to give everybody an opportunity to get their momentum before the game. So everybody had a go in the warm-up games. Unfortunately, it was a 4-1 loss to New Zealand. What did you learn and what do you need to do better in this tournament? Well, when you get into an event like this from a bilateral series like that, we would like to get in with a clean slate. Obviously, we won the last game, so we would like to take the confidence in and the warm-up games that we've built a momentum. And Queenstown is very different to where we are playing here, so obviously the conditions are very different. We have to set a momentum here. This is our first game, and with the conditions here. Your 6th World Cup. Is that fire in your belly just to take it one step further than in 2017? Yes, I think that is something which has kept me going, the hunger to sort of do well in the World Cup, see India do well in the World Cup and that elusive trophy. Go well. Thank you. Bismar, you lost the toss. What would you have done? I think we also want to bowl first, and it looks like a damn wicket, right? And I think if we do well, and we'll just need to restrict them. What is your team news? We are going with the 5 bowlers, and Nahida, Muniba, Ayman, and Olam are missing up. Your preparation's gone pretty well, hasn't it? A good win against New Zealand, one of the favourites for this tournament. Yes, we have prepared well, and we have good warm-ups. It's just we got the belief that we can do it, and we just need to believe in this tournament that we can keep on the momentum. And it's been a busy 12 months for you. Become a mum, maternity leave, captain of Pakistan. Are you coping with it all okay? Yeah, I'm very blessed and lucky to get back what I loved, and all the support I got from the players, and I'm very blessed to be here back. Go well. Thank you. So the news from the middle is that India have won the toss. They're going to have a bat. Right, the big news coming in. Of course, Indians have won the toss and chosen to bat first, and a very happy Mithali Raj over there, Kannan, who was very happy with the decision also turning out in her favor. I think her whole body language when you look at the toss was very positive. The question posed to her was about the warm-up. 4-1 series loss, but she's talked about winning the warm-up game. That's it. A lady who's playing her 6th World Cup, you can't expect anything better. Everyone talks about, mid-30s and being the, end point. But she's 39. You have the fast bowler Jhulan Goswami, 39. So you've got rich experience and you've got youth, flashy batsmen. You've got a nice bunch out there. And it's always good to bat on a wicket like this and put your best foot forward. Right. वेंकट, अगर आप पाकिस्तान के स्क्वाड को देखेंगे तो ये वो स्क्वाड है जिसमें कई सारे चेंजेस आमतौर पे देखने को मिलते हैं, और इनकी जो कैप्टन है वो 2 साल के अंतराल के बाद वापस आ रहे हैं। जो लास्ट मैच खेला था वो T20 फॉर्मेट था। कितना मुश्किल होता है कि सीधे आप कमबैक कर रहे हैं, वो भी एक बड़े टूर्नामेंट में। देखिए कि कमबैक्स हमेशा मुश्किल होते हैं, लेकिन एक चीज़ मत भूलिए, इंडिया पाकिस्तान मैच है जी, इसका अपना ही अलग मजा है, जादूगिरी होती है इस मैच में। तो ये देखना है कि अपॉर्चुनिटी मिल रहा है हर प्लेयर को। तो इसमें 2 साल बाद आ रहे हैं या नया प्लेयर आ रहा है, डजेंट मैटर। आवर फॉर्म ऑन द डे मैटर्स। आप आज कैसे खेलोगे, आज कैसे परफॉर्म करोगे, वो बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए वर्ल्ड कप है जी, इसमें उन्होंने कहा कि हम अच्छे प्रिपेयर करके आए, और वो प्रैक्टिस गेम जो 2 मैचेस थे वो दोनों जीत गए। तो वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट अ टीम लाइक पाकिस्तान in any form. They will play to their best ability, and therefore the Indian team, which has got a lot of experience, Mithali Raj has been there for so many years. This is her 6th World Cup. What an achievement!
What an inspiration to the next generation. And we've got Harmanpreet and so many talent, Mandhana, so many talented cricketers. This is the stage on which they should perform. And not only in this first match, but in all these matches, so that this is a great opportunity for India. And I think they should not miss this opportunity. I'm going to butt in. You're talking Yes. about her 2-year break. She took a break for, becoming a mom. There are 8 moms playing in this World Cup. Very interesting fact that it's not the end of the road once you go into motherhood. 8 mothers playing in this World Cup among the 8 teams. These are fantastic stats. Yes, of course, a point very well raised that motherhood should never stop you from pursuing your career. Clear examples over here, but right now अपने सारे कॉलर्स को हम बता सकते हैं कि हमारी कॉलिंग लाइंस खुल चुकी हैं 01123421084 01123421082। आप इन दोनों लाइंस पे कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। कनन, आई जस्ट कम टू यू टू टेक ऑन द नेम्स ऑफ व्हाट वेंकट वाज जस्ट टेकिंग। मिताली राज का तो नाम उठाएगा, उसके साथ साथ निदा दर और स्मृति मानधना की भी बात करना चाहूँगी। निदा दर की अगर हम बात करें तो खुद में ये करीबन 1290 रन अभी तक बना चुकी हैं, 74 विकेट्स एंड 84 ओडीआईज। ये 3 ऐसे नाम हैं जो एक साथ बहुत अहम कड़ी निभाते हैं इस टीम के अंदर, यानी भारतीय टीम के अंदर। Okay, these names you've taken, these stats are very interesting, but cricket is a sport. It's a team sport. Everyone has to click. You can't expect, for example, इस श्रृंखला में, the India-New Zealand श्रृंखला, we saw, Mithali scored. But the problem has not been so much with the batting, it has been with the bowling, at least there. So you have to look at the bowlers. You've got, Julan, you've got Renuka, you've got Meghna. All fast bowlers, and fast bowlers are going to be pretty helpful on this kind of a track. So main thing is you go out, you put your best foot forward. You've got players, who played in the Big Bash. The whole definition of women's cricket, the world over, especially in India. Like yesterday we saw England versus Australia. 600 runs put on the board in a 50-over match. It was never like this before. Women scoring 600. No, there's no gender bias now. It's a very different. They're aggressive. You get to see 360-degree batting even as well. So it's not going to be one person. You got to click as a unit. Obviously, first match, and I agree 100% with Venkat. It's Pakistan you're playing. There's pride at stake. वेंकट, फर्स्ट मैच जो इस मैदान पे खेला गया था उसमें हमने देखा था आउटफील्ड बहुत तेज है। बॉल को अगर आप अच्छे से चिप कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं तो बहुत दूर जाती है, और स्पिनर्स के लिए भी थोड़ी मदद है। तो ये जो ट्रैक है उससे एक्सपेक्टेशन पाकिस्तानी बॉलर्स की होगी कि एक अच्छे टारगेट पे ही इंडियन साइड को रोक लें। देखिए, वो तो मैच जिसे कहते हैं ना, टैक्टिक्स हैं। आप रिस्ट्रिक्ट करें या विकेट मिल जाए तो फिर एग्रेसिव हो जाते हो, फिर कहते हैं कि नहीं 2 विकेट मिल गया, तीसरा भी ले। सो दैट वेरीज बिटवीन ड्यूरिंग द मैच हाउ इट मैच प्रोग्रेसेस। बट अब देखिए कि अगर आप इंडियन टीम को देखें तो हमारे पास वर्मा है ओपनर, शेफाली, एंड शी इज अ वेरी एग्रेसिव प्लेयर. She likes to play over the top. Now, if she gets going for 8, 6, 8, 10 overs along with the left-handed partner, so we can have a terrific start, and that would put pressure on the Pakistani team. करण, but the problem is कि पिछले कुछ टाइम से उनका बल्ला बोला नहीं है शेफाली का। आज बोलेगा ना, तभी तो वो आपका सवाल सुन रहे हैं, आज बोलेगा. I knew you were going to pop this up. But it's it's that moment where you're going to seize. And World Cup का opening match है against Pakistan. So form is temporary, class is permanent. As Venkat said, she's very aggressive. Right. And fast bowlers will also be nervous from Pakistan side. Yes. I mean, standard has improved in the subcontinent, but our record against Pakistan, is we won very 2 strong. matches. Yes. Of course, we don't play each other often. There are no bilaterals. Right, we'll carry on this conversation. लेकिन अभी हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़ रहे हैं। आइए सबसे पहले अपने पहले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपको भी नमस्ते। Good morning. सर, मैं आपको लाइव देख रहा हूँ दूरदर्शन पे डीडी स्पोर्ट के माध्यम से। आपको देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस समय। शुक्रिया शुक्रिया। पूछें क्या सवाल है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं आपका आकाशवाणी का बहुत पुराना श्रोता हूँ, पिछले 20 साल से आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है जब इंडिया की कमेंट्री, भारतीय मेंस टीम की कमेंट्री जब आकाशवाणी से नहीं आती है। तो मेरा सवाल आपसे सर, एक सवाल है सर, मुझे ये बता रहा हूँ मैं, आज इंडिया बड़ा जबरदस्त तरीके से जीतेगा और इसमें टीम मंदाना शतक लगाएंगी नाबाद।
क्या बात है, स्मृति मानधना आज शतक लगाएंगी, ये दुआ आई है, या ये कह लीजिए ये तो ऑलमोस्ट लेकिन अल्टीमेटम आ गया है, पहले से ही उन्होंने देख लिया है, दूरदृष्टि जिसको कहते हैं। नहीं, पर उनको देखिए ना, he started with men's cricket but then he's looking forward to women's cricket. That is the heartening feature. Correct. Okay, Kanan, I wanted to ask you, since we were talking about the good form of India, we do know कि जो आपने कही भी बात कि भारतीय खिलाड़ी 2 मैचेस ऑलरेडी पाकिस्तान के खिलाफ जीत चुके हैं, इट्स अ क्लीन स्लेट सो फार। पाकिस्तानीज की सबसे बड़ा फोकस यही रहेगा कि दोज मिजरीज डोंट कम बैक टू बिकम रियल टाइम लाइव टुडे, खास तौर से बिकॉज दोनों बार जब भी पाकिस्तानी हारे हैं तो बहुत बुरी तरह एक तरह से उनको हार का सामना करना पड़ा है भारतीय खिलाड़ियों के हाथों। देखिए, जब आप मैदान में उतरते हैं ना, अब स्टैट्स रिकॉर्ड बुक पढ़ के नहीं उतरते, you have to go and play, and the standard has changed. I mean, you look at Pakistan, you look at the way, Bangladesh, they've also got a very strong side which is coming up. Who would have imagined that West Indies is going to defeat New Zealand? All the hopes were on New Zealand. तो उलटफेर होना शुरू हो गया है। 3 सेंचुरी ऑलरेडी इस टूर्नामेंट में लग चुका है। तो वी आर लुकिंग एट एक्सप्लोसिव बैटिंग। और जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, कभी अंडररेट मत करिए, क्योंकि ये जो कप्तान बन के आई है बिस्मा, शी इज इन फॉर्म, शी लुक्स सुपर फिट। आई थिंक शी इज लुकिंग फिटर देन most other cricketers. वेंकट वो कहते हैं ना कि when you got the ability to do the most, वो कब करेंगे कि जब आप least expected। और पाकिस्तान की साइड आज हमेशा अंडरडॉग की तरह रही है, लेकिन अंडरडॉग हमारे कॉलर्स नहीं है, वो हमेशा हमसे जुड़ते हैं और जब भी जुड़ते हैं कुछ नए सवाल लेके आते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, बात करते हैं उनसे। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नदीम खान बात कर रहा हूँ, गांव अगवानपुर, डिस्ट्रिक्ट मेरठ, यूपी से। जी नदीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे मिताली राज हैं जी, वो हमारी एक तरीके से आप कहा कि वो सचिन तेंदुलकर हैं और उनका ये लास्ट वर्ल्ड कप है जी। तो हम तो ये चाहेंगे कि सचिन तेंदुलकर जैसे अपने आखिरी लम्हों में वर्ल्ड कप जीत गए जी, तो इसी तरह से जो है मिताली राज जी भी अपना वर्ल्ड कप जीते और बहुत अच्छी तरीके से जो है वो मतलब क्रिकेट को खैरबाद गए। तो मैं दूसरी बात मेरी ये है कि शिफाली शर्मा जो है वो आजकल बिल्कुल नहीं चल पा रही हैं, पता नहीं क्या मसला है उनके साथ। जैसे सहवाग बैटिंग करते थे, हालांकि करते तो वो ऐसे ही है, लेकिन आजकल क्यों नहीं चल पा रहे हैं, क्या मसला है उनके साथ? क्या उनकी टेक्निक में कोई प्रॉब्लम है, क्या मसला है, जरा आप बताइएगा। अभी जो टेक्निक्स है उनके लिए हम वेंकट के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहला जो आपका सवाल था उसमें मैं सीधे कनन के पास जाऊंगा। कनन, आई कैन क्लियरली सी दैट स्माइल ऑन योर फेस। जो क्वेश्चन था ना कि मिताली राज, आप वर्ल्ड कप्स की बात कर रहे थे, 6 वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं पिछले। मैं स्माइल इसलिए कर रहा था कि उनकी तुलना किनसे हो रही है, सचिन तेंदुलकर। इससे बड़ा कोई उनके लिए आप यू कैन नॉट गिव अ टाइटल। खेल रत्न अवार्ड जीती है लास्ट ईयर, इससे ज्यादा आई डोंट थिंक यू कैन shower praise on मिताली राज। और दूसरा जो नाम लिया कंपेयरिंग विद सहवाग, मतलब एक्सप्लोसिव बैटिंग, तो देखिए कि श्रोता कितना समझदार है। ही अंडरस्टैंड दैट वुमेन्स क्रिकेट इज नॉट डल, इट इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव, और वो चाहते हैं इसी तरह का बैटिंग हो। इसलिए मैं स्माइल कर रहा था कि पीपल आर क्लूडेड एट दिस टाइम सो अर्ली इन द मॉर्निंग। एक नाम थोड़ा सा शायद मिस कर दिया था, झुल्लन गोस्वामी को मैं ज़हीर खान के साथ में दे देता हूँ। वो भी ऐसे खिलाड़ी है जो काफी टाइम से इंडियन स्क्वाड के साथ जुड़ी है, उनका भी शायद अंतिम वर्ल्ड कप। गोस्वामी इज बेटर देन ज़हीर खान। आई विल कंपेयर हर विद कपिल देव। ओह माय गॉड। ओके, लेट्स कम बैक टू द अदर क्वेश्चन आल्सो जो हमारे श्रोता ने पूछा था। मैं आपके पास आऊंगी वेंकट। शिफाली वर्मा के फॉर्म के ऊपर उन्होंने बात करी कि टेक्निक उनकी कहाँ पे कुछ गड़बड़ा रही है, क्या रीजन हो सकता है कि वो अभी तक फायर नहीं कर पाई हैं। What would you say on that? देखिए, ऐसा है कि she is the type of player who likes to go for a stroke from the ball, first ball, right? तो उन्होंने सहवाग से कंपेयर किया, तो सहवाग जो है, सहवाग was an aggressive player. He changed the way concept of opening the batting, right? Now this girl is playing aggressive cricket. उसमें there sometimes you're bound to play early because you're playing the new ball also, and sometimes the wicket could be slightly soft, etc. Right. If she takes say 2-3 overs to just settle down, get used to the light, get used to the pitch, she will succeed. And it is a good thing that she's playing her normal natural game. She's not changing her game just because she has failed in 2-3 matches. Right. So she will come good, and when she comes good, she can change the way the match progresses. Kanan, what would be the role of Smriti Mandhana now? Because the opening pair that she is playing with is not that comfortable, hasn't scored that many of runs. So what is going to be her role? Her role is going to be bat. Her role is going to be, score. Her role is going to be whatever is assigned to her. She'll do it. You cannot look at specific who's going to do what. You have to just go ahead and do your job for the day. You have to play according to the situation. This is not a T20 match. This is an ODI match. There's time to pace yourself. There's time to, look at the situation. If you haven't got a good start, how do you consolidate in the middle? And if it's power play, it's a different situation. Again, last 10 overs, how do you bat?
So I think everyone knows they've been there together for a long time. They've played enough. I agree that उतना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को नहीं मिला इंडियंस को, वुमेन की खासकर अगर आप बात करें. So, but now this series was very important in New Zealand. You lost, but you picked up so much match. And मिथाली ने कहा कि ये वेन्यू और जो वेन्यू में हारे बहुत अंतर है. तो we will expect that it's a collective good performance because you have to score runs. If you're not, आज की डेट में 250, 270 भी कम लग रहा है वुमेन्स क्रिकेट में. That is my point. Yes, the pitch looks like a good pitch for batting definitely, but we would also like to request all our callers कि हमारी calling lines खुल चुकी हैं. हम आपको नंबर पहले ही बता चुके हैं 011-2342-1084, 011-2342-1082 being our calling lines. Please feel free to call us. And also a quick update to all our listeners right now joining in that India have won the toss, chosen to bat first. Let's also give you the playing 11 from the Indian side right now. Smriti Mandhana, Shafali Verma, Deepti Sharma, Harmanpreet Kaur, Mithali Raj, Richa Ghosh, Sneh Rana, Jhulan Goswami, Megha Singh, Pooja Vastrkar and Rajeshwari Gaikwad would be the playing 11 for today. And from Pakistan side, this would be Javeria Khan, Sidra Amin, Bisma Maroof, Momaima Sohail, Nida Dar, Alia Riaz, Fatima Sana, Sidra Nawaz, Diana Beg, Nasra Sandhu and Anam Amin. These being the playing 11 for both the squads over here. वेंकट आपके पास अगर आओ तो जिस तरह की पिच आज देखी जा रही है उसके ऊपर क्योंकि बैटिंग कहा जा रहा है, it's a batting strip. What do you think would be a good target to be put on board today from the Indians' perspective if they're looking at something? See, India will be looking at around 300 runs. But to get that many runs, you have to have a good start. Because we have seen that this World Cup has been a high-scoring event. If you see the matches, yesterday 600 runs were scored between England and Australia. Now, I feel that if you get a good start, that is vital. You have to get a good start. Say 50 for no loss would be ideal, but 50 for 1 in say 10 overs, 5 runs per over, even 12 overs. That's a good start because you have got wickets in hand. There is Nasra Sandhu who's playing for Pakistan. She's a left-arm spinner. Correct. And she's got attractive figures. Her bowling figures are good. 4 for 24 or something is the best bowling analysis. So you have to be careful. You can't take things for granted. You have to wait and watch, play yourself in, and then play the waiting game. As Kannan rightly mentioned, it's a 50-over match. There's plenty, 300 balls in which to... So if you bat your full 50 overs and if you want to score a run per ball, you'll get about 300 runs. Right. कनन, और जो एक्यूरेसी है वो पाकिस्तान को यहाँ इस मुकाबले में लेके आनी होगी क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में जो यादें हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी है. आई नो कि स्टैट इतना बड़ा फैक्टर प्ले नहीं करते, बट पिछला जो वर्ल्ड कप था एक भी मुकाबला पाकिस्तान की टीम जीत नहीं पाई. 7 के 7 गेम्स वो लोग हारे और अब यहाँ पे इंडिया के साथ में उनका पहला मैच. देखिए, एक एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में इंडिया ऑन टॉप, वी लॉस्ट द फाइनल सो क्लोजली 9 runs and Pakistan finished at the bottom. But Pakistan obviously have not come here to lose. They have obviously worked very hard. They've come. And अगर आप देखें कि मेंस टीम का भी आप चर्चा करें, ऑस्ट्रेलिया वहाँ पाकिस्तान में पहुंचा है. ऑस्ट्रेलिया defeated England so badly at home in the Ashes, and look at it. So they have so much of positive energy to take from the men because obviously you look at the men as your leaders. Women are not the leaders there in subcontinent, whether it is Pakistan or Bangladesh. So they'll come there. They have nothing to lose. ये अंडरडॉग का जो शब्द है ना, ये बड़ा खतरनाक शब्द है. जब अंडरडॉग बन जाता है रेडी टू बार्क एंड बाइट, then you have to watch out. Yes, when the underdog becomes the king, should we say, or the lion, ready Top to bark dog. and bite. Yes, top dog also could be a good one. But right now, gentlemen, we also being joined by a couple of callers. सबसे पहले कॉलर के साथ जुड़ते हैं. नमस्कार, गुड मॉर्निंग. हेलो. नमस्कार, गुड मॉर्निंग. जी गुड मॉर्निंग. क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं, बताएं प्लीज. जी मेरा नाम निरंजन कुमार हुआ, मैं बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ. आपका स्वागत है हमारे शो में. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन. क्या पूछना चाहेंगे आप? जी पूछना चाहेंगे नहीं, आज तो स्मृति मंदाना शतक लगाएगी. स्मृति मानधना शतक लगाएगी. दूसरे शख्स ने आज ये बात बोली है जनाब. आप भी दूसरे एक श्रोता हैं जिन्होंने ये बात बोली है. उम्मीद करते हैं ऐसा हो. कुछ पूछना चाहते हैं आप? जी नहीं बस वही शेफाली वर्मा तो खेल रही है ना. जी शेफाली वर्मा खेल रही है. हाँ जी. Thank you so much for calling in, and I think we have another caller. No, the other line has dropped, but a lot of hope, Ayush, being joined and associated with the fact कि आज स्मृति मानधना शतक लगाएं. अगर आपसे मतलब आपने हरमनप्रीत को बुलाई दिया? नहीं, क्योंकि उनका नाम इतना लिया जा रहा है ना, आज सारे श्रोता यही कह रहे हैं, उम्मीदें उनसे जोड़ी जा रही है. So there's a lot happening around the name of स्मृति मानधना खास तौर से आज.
I think that's because of her performance. That's because of her Yes. caliber. People expect that she's going to do well. But as I feel, even Harmanpreet is there. There are a whole lot of people there. There are a lot, You've yes. got people in the middle order also Yes. who can bat. And don't forget the biggest batswoman. I don't like the word batter. The biggest batswoman has been Mithali Yes. Raj. Over 7,000 ODI runs. I mean, how are you going to overlook that? 51.85 being the ODI. Yeah, what a lovely Very good average she's got, the sheer consistency and that pressure. And she spoke of that hunger. Yes. So that hunger is there. If she is hungry, if Julian is hungry, everybody is hungry. I think it's going to be a good breakfast for people waking up in India. पाकिस्तान की साइड भी उम्मीद करेगी ब्रेकफास्ट में खूब सारे विकेट्स उनको मिल जाए, क्योंकि अगर जीत से शुरुआत करनी है तो ब्रेकफास्ट में विकेट लेने होंगे। वेंकट, इंडियन स्क्वाड में स्मृति मंदाना की लगातार बात की जा रही है। आमतौर पे हमारे शो में ऐसा होता है कि श्रोता कॉल करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। आज सिर्फ घोषणा कर रहे हैं कि स्मृति मंदाना आज जाके और एक शतक लगाएगी। सब स्मृति कर रहे हैं। हर टीम में आपके फेवरेट्स होते हैं जी। एज अ फैन जी। तो ये है कि शी इज इन द लाइमलाइट, सारे लोगों का नज़र उन पे है, तो इसलिए वो सारे लोग। बट लेकिन मैं समझता हूँ कि मिताली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप है और बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर और टेक्निकली काफ़ी करेक्ट खेलते हैं क्रिकेट, ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलते हैं। लोग कहते हैं कि थोड़ा स्लो है, विद एज शी हैज लर्न कि आप विकेट पे रहो तो रन मिलेंगे। इफ यू स्टे एट द विकेट्स द रन्स विल कम एंड यू विल गेट द बैट बॉल विच यू कैन हिट फॉर 4. So I think that experience and that ability to hold the middle order together is very important. Even if you lose a few wickets at the top going for runs, she can consolidate and create the atmosphere for launching an attack towards the end of the innings. Right, and since so much of talk is happening over Smriti Mandhana, quick stat update for all the listeners over here that she has accumulated a total of 2,461 runs in her ODIs so far, of course, at an average of 41.71. That of course is some very good figures to be dropped out there. But Kanan, अगर हम इन तीन नामों को हटा भी दें, निदादर, मिथाली राज, let's even take out Jhulan Goswami and then Smriti Mandhana, इसके अलावा भी अगर हम देखें तो हमारी पूरी जो टीम है वो अपने आप में इस समय इतनी balanced है कि if these names do not or are unable to fire on a given day, do you think the rest of the players can still contribute towards helping us reach a good one? I think that is the way modern cricket is. Whether you're Yes. a test batsman, whether you're an ODI batsman or a T20 batsman, irrespective of the format, irrespective of men or women, you have to score. I mean, I'll go back to yesterday's match. The way, Australia versus England. And at the same time, you saw in Mohali, Ravindra Jadeja is coming back, hammering such huge runs. So everyone knows, whether it's a batsman or a bowler, he knows that he's got to do multiple roles. And ODI and T20, both of these is white ball cricket format. There's no specialist role. Probably the only specialist role is wicket keeper. There again, the wicket keeper who has a batting edge gets... Kanan, you were talking about multiple roles. We have got a caller with us. देखते हैं उनका रोल क्या है, क्या वो कोई घोषणा कर रहे हैं या उनके पास कोई सवाल है। जुड़ते हैं कॉलर के साथ। हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी इंडिया जीतेगी। एक और घोषणा हमें देखने को मिलेगी, एक और ऐलान हो चुका है। कनन, कोई सवाल आप लेके आए हैं? जी, स्मृति मंदाना आज अच्छा खेलेगी। स्मृति मंदाना, ये एक और घोषणा, और शायद तीसरे श्रोता जिन्होंने घोषणा की है। कनन, आपके पास सीधे आते हैं, बस नेशनल एंथम्स हो रहे हैं और उसके बाद में एक्शन सीधे लाइव है। व्हाट इज द स्कोर दैट यू थिंक कि इंडिया की टीम या कम से कम कोशिश करेगी बनाने का? Venkat just said 300, don't forget. So what would your score be? I'm putting it at least 285. 280 to 285 is what we want. But, well, if you're not going to score that, then you've got the bowlers to fire as well. It's advantage India because form, past form and current mood all point towards India doing well. Okay, so advantage India, keeping fingers crossed on that note, because two of our experts in the studio today say that 300 or at least a 280, 285 would be a good score. But let's also just one last question, Venkat. हमने इंडियन एंगल को इतना डिस्कस कर लिया, पाकिस्तानियों के एंगल से अगर हम डिस्कस करें या उनसे आपके एंगल से उससे पूछे उस पर आपके ऊपर, पाकिस्तानी क्या कोशिश करेंगे कि भारतीयों को किस स्कोर के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर लें आज? वो तो चाहेंगे कि 150 आउट कर दें। I thought probably you would say Well, it would be straight half, a team's from dream 300 to come true. 150. Even 50 पे अगर all out कर सके. Pakistan would not want India to make No, but a big realistically No, you speaking, can't play this game in the studio. Yeah, You have to just play it correct. on the field. So you Yes. can't, generalize and come to a conclusion. But I think the thing is now the
Pakistan team would be looking to bowl a consistent length and line Right. to one side of the wicket and to field well. Yes. Because if you field well, you put pressure on the opponents. So I think that would be their game plan, and that I think is normally we see this in limited Most of overs the cricket. cricket, right. So I think Indian team should be careful about that. They should take their chances, but calculate it properly before taking chances. कनन, हमारी तो एक्सपेक्टेशन यहाँ से यही रहेगी ना कि एक ऑलराउंड अच्छा क्रिकेट देखने को मिले, कुछ अच्छे रन्स बैट से आए तो कुछ विकेट भी जाए तो इतना बुरा नहीं है, क्योंकि मैच कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, राइट? Match should be competitive, and I think you're going to watch one innings. By that time, you'll get the option to watch the test match also. So, but my heart is out for the women, because they really have put in a lot of hard work and come here this far. They've got to make up for the loss last time in the final. Yes, of course, and that is all that we had right now from the studios of All India Radio and अनुमानों के आईने में. उम्मीद करते हैं कि that we witness a good game of cricket today as India come up against Pakistan after winning the toss and choosing to bat first. Over to our commentary team from here. अनुमानों के आईने में इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रवीण चंद.